Welcome back, children. I would like to tell you all that elocution को हिंदी में वाग्मिता कहते हैं. The correct usage of words and the way you speak correctly, clearly and without an accent. अब जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, elocution ये नहीं कि बस अंग्रेजी के लिए है. Elocution is for all the languages. Okay? अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में भी सही उच्चारण बहुत ही महत्व रखता है कि हिंदी का जो एलोक्यूशन है उसके क्लासेस में अलग से होगी. Now we had recited a poem in my last class and it was on welcome, welcome. So shall we quickly repeat this little short poem so that we can welcome each other? Welcome, welcome everyone. It is time to have some fun. In fact, we should have fun always. जब कोई भी काम करते हैं और उसको मजे लेके करते हैं तो वो फिर काम नहीं लगता है कि नहीं. पढ़ाई भी कीजिए तो अगर मजे लेके कीजिएगा तो आप लोग को लर्निंग बेटर होगी. वही रो रो के काम कीजिएगा, काम का जो आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम, वो कम हो जाता है. सो खुश रहिए एंड हैव लॉट्स ऑफ फन. वेलकम वेलकम एवरीवन. इट इज टाइम टू हैव some fun. We'll read books. You all must read books. And आजकल there are lot of books जो e-learning है, e-books है. आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं. घर पर है किताबें, जरूर पढ़िए आपके लेवल की. We'll read books and make new friends. We'll sing songs and play pretend. मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था. Pretend means that हम लोग वो बन जाएंगे जो हम लोग की इच्छा है बनने की. मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो we will actually start speaking like that. Okay? टीचर बनना चाहते, टीचर के लिए बोली बहुत, elocution is very important. And to play pretend, very soon we'll be having a fancy dress competition online in the virtual world, something in 2020, something new. We'll sing songs and play pretend. Welcome, welcome everyone. I'm so glad. Glad ka matlab, I'm so happy that you have come. So keep attending my elocution classes so that my little children can speak very articulately. That means each word is clear. Now there is one new poem which I would like to introduce to you all, and it is specially for my pre-primary students, for my pre-primary children, which is actually the pre-primary stage is the most important stage in a person's life. एक बार जब रूट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बाद में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So come on. The title of this poem is I'm a little star, or I am a little star. Little star, तारा. Now children, कभी किसी छोटी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. जब रात में एक मच्छर छोटा सा भी परेशान करता है तो वो बड़े बड़े लोगों को हिला देता है. सो ये सोचना कि अभी बच्चे हम ये छोटे हैं तो हम लोग उन लोग को छोटा समझें, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज 90% of the brain development in a human body reaches it is complete by you are when you are in the kindergarten, KG class. Okay, so y'all are the young children are at a stage जब उन लोग का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है. तो हम लोग को बच्चों से कुछ सीखना चाहिए, है कि नहीं? So let's start with the poem. Let's recite. I'm a little star. I'm a little star, Tara, shining bright. Yes, you all are shining bright. Growing bigger every night. This is for the parents कि every day हमारे बच्चे में ग्रोथ हो रही है. तो एवरी मोमेंट को ध्यान में रखिए और प्लीज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद चिल्ड्रन बिकॉज दिस इज द बेस्ट एज for imbibing learning. Okay, I'm
am a little star shining bright, growing bigger every night. Now, when I finish pre-primary, the most important phase of my life, I will shout. I'm a star. So you better watch out. Yes, full marks to you, children. Y'all will be full big stars very soon. Y'all are already stars because y'all are learning the maximum just now, and we elders should be learning a lot from you all. Parents, kindly make your children recite this poem and send me videos so that I can ensure that learning is taking place in our little ones. So God bless. And before I sign out, I would like to recite this poem once again. I'm a little star, or I am a little star. I am a little star shining bright, growing bigger every night. When I finish pre-primary, I will shout, I'm a star. So you better watch out. God bless you all and happy recitation. Thank you.